वो प्रेजेंटेशन ऑन करेंगे आप? हाँ, वो इसके गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल। हमारी आज की गुफ्तगू का उन्वान है एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी लेसन्स फॉर पाकिस्तान। तो आज हम ये देखेंगे कि ये एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस। इस आइडिया की जेनेसिस क्या है, आइडिया क्या है और इवॉल्व कैसे हुआ है, और ये कि ये एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं दुनिया भर में उनको कैसे ये रेवोल्यूशनाइज कर रहा है और कैसे मदद कर रहा है। ये भी कि हाउ यूनिवर्सिटीज़ कैन हार्नेस देयर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज टू ड्राइव इनोवेशन, फोस्टर कोलैबोरेशन एंड क्रिएट अ सस्टेनेबल पाथ फॉरवर्ड इन एन एवर चेंजिंग एजुकेशनल लैंडस्केप। और इस गुफ्तगू का सबसे अहम हिस्सा ये है कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी समाज या पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम के लिए इसमें क्या लेसन्स हैं और बेहतरी के क्या असबाब और इम्कानात हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर स्पीकर डॉक्टर नासिर हुसैन बुखारी साहब। ये आज हमारे साथ इस मौजू पर अपना नुक्ता नज़र और जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पेश करेंगे। आपकी डॉक्टरेट इन एजुकेशन फ्रॉम शिनख्वा यूनिवर्सिटी बीजिंग। इसके अलावा आप रिसर्च एसोसिएट रहे हैं फॉर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ एल्बर्टा कनाडा। करंटली आप सर्व कर रहे हैं एज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन ओवरसीज पाकिस्तानीज फाउंडेशन इस्लामाबाद। और ये भी कि आप शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सबकी आमद का शुक्रिया। एक छोटा सा काम ये कीजिए कि अपने सेल फोन्स जो हैं वो काइंडली साइलेंट मोड पे कर लें ताकि किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना हो। और इसके साथ ही अब हम नासिर साहब को दावत देंगे कि वो तशरीफ़ लाएं। थैंक यू वेरी मच। डज इट वर्क? जी, मैं इस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करने लगा हूँ। बेसिकली इट इज़ वेरी नोवाइस इन पाकिस्तान एंड इट हैज़ बीन अ वेरी सीरियस इशू फॉर पाकिस्तानी हायर एजुकेशन सिस्टम. Pakistani higher education system is basically suffering from the lack of public funding. And consistent decrease of public funding is not a phenomena for Pakistan. It's the phenomena all across the world. So what we are going to discuss today, it's basically related to that phenomena. So I hope we will have an interactive discussion. Before I commence to speak on this topic, may I request to share the ideas. How do you get this idea, this word, the Entrepreneurial University? Do you have some idea? Yes, please. I do not have any idea, but I want to know that. मैं उर्दू में कहूँगा क्या किसी रीज़न ये था मुझे यहाँ पे आने के लिए कि मुझे कुछ नया सीखना था या कुछ नया देखना था या कुछ नया सुनना था। तो ये वैसे ही वेबसाइट पे आया और मैंने देखा और रजिस्ट्रेशन करी। साथ में मैं जो है ना अपने दोस्त को भी ले आया। तो यहाँ पे आके जो है ना सुनना चाहता था और देखना चाहता था कि व्हाट एवर इज़ हैपनिंग हियर, और क्या लेसन्स है पाकिस्तान के लिए, या हम दे सकते हैं या हम ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसे उसके लिए जब हम कुछ नया सीखना चाहते हैं या हम कुछ नया हासिल करना चाहते हैं इल्म के ख़ज़ीने में से, तो डेफिनेटली वी शेयर द आइडियाज़। इसको आप प्रेजेंटेशन को ऑन करेंगे आप? दिस एक्चुअली दिस एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी इज़ द आउटकम of the decrease of public funding in the world. So the main important point is the decrease of public funding in the world and how it has affected the universities and their efforts to regain their self-sufficiency. So this idea is related to this one. This first point you must keep in mind, that when we talk about the Entrepreneurial University, it has been taken, the word has been taken from entrepreneur. Entrepreneur ka to idea, I hope all of you have the idea of entrepreneurs. So actually when we
will we start discussing about it. So you must keep in mind that entrepreneurial university means the professors are academic entrepreneurs, and university is a social enterprise that provides the opportunity to link the university with the industry and to use the professor as an academic capitalism. Now we are going to start our discussion. Next one, we have these three parts, and I will try my best to finish it early, and I don't want to make you boring. I will try my best to make it more interesting. How to evaluate how this idea of entrepreneurial university start to evolve in the world. So this part we will deal. Then is what is actually entrepreneurial university. And the last one is how can we make this in Pakistan. Before we go for this, the idea of entrepreneurial university was presented by a sociologist and renowned professor of sociology and higher education from Yale University, Richard Burton Clark. And these two books, which I would like to introduce to you, one is Creating Entrepreneurial Universities, Organizational Pathways of Transformation. This book actually consists of the studies on 7 universities existing in 3 or 4 continents of the world. And in this book, actually he developed the idea that the lack of funding all across the world, and particularly the American universities, how can they cope this problem? This one, and the second book is related to this, Sustainable Change in Universities. It deals with the entrepreneurialism in the universities. So if you want to have the copies of these two books, I personally feel that only these books are available with me because I got it from my professor. Here you can see the signature of Burton Clark. He gifted him to my supervisor, Dr. Xiao Yang Wang, and he just gave me these copies for one day only. He said, you can have a photocopy and then return my book. So I have this. I can give it to Afaq with a very sacred trust. मुकद्दस अमानत के तौर पर मैं ये किताबें उसको दे सकता हूँ. जिस किसी बच्चे ने दोस्त ने लेनी हो तो then Afaq can help you to get its copy. लेकिन अगर ये गुम हो गई तो फिर Afaq will be left up. So this one, and the other book that I would like to introduce, this book is my own book. This is a Neoliberal Globalization Landscape of Higher Education in China and Pakistan. This book also provides you a lot of information about the university of a Chinese model of universities, which they say national hybrid university model. Then I and Professor Wong Shou-Yong have discussed about the model of China and Pakistan, and then how the people go to, when the students go to China, what kind of problem they face. So these 3 books first I would like to introduce. Now, sir, please go to the next one. This is very important when we talk about the decrease of funding. Its underpinning, its philosophical underpinnings are related to globalization. So मैंने कोशिश की है कि sir, please next. This is a definition by Barbulus and Torres. This book published in 1977. It's about globalization. The name of the book is Globalization. These two authors actually have Marxist inclination. So I selected this because it was very critical definition. Globalization is a perceived set of changes, a construction used by state policymakers to inspire support for and suppress opposition to changes because the greater forces. Now 2 words are very important. One is perceived set of changes. The government and their agencies
relating to finance and ads, they actually perceived some sort of change, and that change is under the pressure of the international global economic forces. And international economic global forces, global competition responses to IMF, World Bank demands, obligation to regional alliances like SARC, ECO, and other kind of organizations which they demand to the states, the members, कि इसको तब्दील कैसे करेंगे आप अपने मुआशी हालात को हमारे मुताबिक कैसे बनाएंगे. Leave the nation state no choice to play a set of global rules not of its own making. तो जब हम ये कहते हैं ना कि रियासत जो है वो पेट्रोल महंगा कर रही है, रियासत सुई गैस के पैसे बढ़ाती जा रही है, रियासत यूनिवर्सिटीज़ को और फंडिंग की डिक्रीज़ पर ले आई है, और रियासत जो है वो जनाब अवाम का ख्याल नहीं रख रही, तो ये दोनों बंदों ने 1977 में बता दिया था कि रियासतें नेशन स्टेट्स विल इरोड and their role will become very limited just to facilitate the free market economy. If we currently talk about with reference to Pakistan, and when we complain, against the high prices or the peak of the inflation, it's all due to the global perceived changes. इसमें आप और मैं कोई रोल प्ले नहीं कर सकेंगे. हम अगर ये कहें कि कोई रेवोल्यूशन आ जाए perhaps and the whole system is ousted, existing system is totally ousted, तो हो सकता है कि हर एजुकेशन सिस्टम भी उसके मुताबिक चेंज हो जाए. अदरवाइज आप देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में PhD फैकल्टी जो है they get 35,000 per month. Teacher is being paid 5,000 in schools and colleges. It's less than the wage of a labor, and it's not due to the policies of Pakistan, it's due to the pressure of the world economic forces. Sir, next one is globalization. जो है ना ये it's very dimension, it is multi-dimensional. इसकी जो है ना वो है number one. अब मैं आपको ना ये तो आप पढ़ रहे हैं सारी बातें कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, transfer of policies across border, transmission of knowledge, cultural stability, relation and discourse of power, or establishment of global market free from socio-political power. This last one is the most important. बाकी सारी तो एक वो कह लें ना नरेटिव के साथ हैं. अब मैं आपके सामने ना बड़े briefly I would like to put 4 important theories on globalization. पहली जो है ना माशाल्लाह आप सारे दानिशमंद लोग बैठे हुए हैं. The first one is the world system theory that was presented by Wallerstein. और उसने कहा था कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है वो 4 उसकी बाकी पिछली बातों को हम छोड़ देते हैं जो उसने कदीम दुनिया के बारे में की. I'm just putting the example of, he says there is 3 components of this theory. According to this, the world is divided into 3 major categories. One is the core. Core means the richest country of the world, जिन्हें आप G20 कह लें. मतलब European Union, the United States, the UK, Canada, Australia, and China. These have become a core. Core means from where the policy, from where the money moves, or their knowledge is moving or coming out. Number 2 is the periphery. अब वो कहता है कि the core, the periphery, and the semi-periphery. अब मैं पढ़ के सुना रहा हूँ तो आपने गौर से इसको समझने की कोशिश करनी, क्योंकि this is very important to understand the system of education being influenced by the world. Number 1, he says the core represents the highly developed centers like European Unions and the developed states which were colonial power. Periphery consists of those regions that were colonies for the centuries, and these components semi-periphery consists of the areas which were once part of core but now have become independent states such as Southeast Asia, South Asia, Latin America.
तो अगर हम political, if we talk with the sense of the political science, the world is divided into three: core, periphery and semi-periphery. Semi-periphery has been their colonies. Now we come up to the education. If we apply this theory on education, then in the world, the universities in every country actually divided into three categories. The university of the core, the university that is located in Islamabad with fully funded university. Then is the periphery, like the universities in Balochistan for flung areas, KPK, Sindh, Punjab, and then those universities who are very near to the core. These are competitors within the country and outside the country. इनका मुकाबला, what sort of competition they have to attract the more and more students, to attract the funding for research, to attract funds for establishing the physical infrastructure, and to attract the collaboration with the industry. In the modern world, still Pakistan. अच्छा, दूसरी थ्योरी जो है ना वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है, जिसने वर्ल्ड में दुनिया को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया. That is related to Sclair. Sclair says his theory is known as the theory of global system, and he says the global system elaborates the role of transnational practices. Means that all the nations, they said they have developed or evolved some kind of system of practices with reference to the flow of money, with reference to the change of political system. And number two, in the development of the global capitalism, he considers the TNPs, transnational practices, are actually non-state actors and cross-state borders. I think I have no need to explain it. Okay, non-state actor means the multinational companies. They are working across the borders. And then he says these transnational operates with the support of trans-capital. Transnational capital means the capital from all the countries that accumulates into a multinational company. And then at the political level, transnational practices functions by the assistance of transnational capitalist class, TCC. अब इस पे एक्सप्लेन करूं या बात क्लियर हुई है कि पूरी दुनिया में एक ट्रांसनेशनल प्रैक्टिसेस हैं, उसके ज़रिए पूरी दुनिया के सरमाए को रेगुलेट किया जाता है, और वो मल्टी स्टेट वो होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज. अब उनको सपोर्ट किसकी चाहिए होती है? उनको हर कंट्री के अंदर जो है ना TCCs यानी ट्रांसनेशनल की सपोर्ट चाहिए होती है. हर मुल्क का जो बहुत अमीर लोग हैं, दे बिकम द पार्ट ऑफ द, तमाम दुनिया के सरमायाकार मिलकर फिर उसमें इन्वेस्ट करते हैं. और इन द लास्ट the cultural elites, all the three trans practices are interrelated to each other and is primarily identified with major institutions. The most important institutions for economic transnational practices is the transnational multinational corporations, or multinational corporation needs the highly skilled professionals. And highly skilled professionals are produced by the universities. Is it clear? Okay. अब आते हैं एक और जो कैस्टल है, उसकी थ्योरी बड़ी इससे ज़्यादा थोड़ी दिलचस्प है. कैस्टल का कहना ये है कि जनाब कैस्टल ने 3 दफ़ा अपनी पहले उसने पेश की 1996 में, फिर 97 में रिव्यू की, फिर 98 में उसने इसको फाइनलाइज कर दिया. Castell says कि जनाब we are living in the new age of information, and new age of information जो है ये बेसिकली हमें लेके जा रही है ग्लोबल टेक्निकल कैपिटलिज्म की तरफ. और ग्लोबल टेक्निकल कैपिटलिज्म नीड्स द स्किल्ड वर्कर which can contribute in the form of, for example, call center. You are sitting here in Pakistan, you wake up whole night and you sell in America and they pay you. दुनिया के सबसे बड़े कॉल सेंटर इंडिया में है,
इवन अगर आपने वो किताब पढ़ी हो द वर्ल्ड इज फ्लैट, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग सर, यू मस्ट गॉट इट, द वर्ल्ड इज फ्लैट एंड द वर्ल्ड इज फ्लैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि जापानीज एंड चाइनीज दे आर एनिमीज ऑलमोस्ट, लेकिन जो उनका शहर है दालियान, उसमें सारे जापानी कंपनियों के कॉल सेंटर हैं और रात को चीनी बैठ के पूरी दुनिया में उनकी मार्केटिंग करते हैं। सो दिस इज रिलेटेड टू दैट। और जो है हार्वे, कॉक्स और लैश एंड अरे, वो कहती हैं कि नेटवर्क्ड एंटरप्राइजेज आर इवॉल्विंग। तो ये है जनाब वो। और गिडन्स ये कहता है कि एक्चुअली द डिस्टेंसिएशन बिटवीन द वर्ल्ड इज कन्वर्टिंग इनटू द डिटेरियलाइजेशन, कि दुनिया जो है वो सिमट कर इस मकाम पर आ गई है कि अब कोई टेरिटरी की बाउंड्रीज नहीं रहेंगी फॉर होम, for those people who are related to knowledge, who are related to capital, and who are related to networked knowledge based economies. So ये है वो major philosophical background of the Entrepreneurial University. Then we move forward. ये सारी बातें तो आती रहेंगी उसमें, उसके अंदर आगे चलें। अब आते हैं जी historical perspective। देखिए, history says that globalization is not a new phenomenon. Globalization is centuries old. Since the man started to live on this planet, the globalization has started. ठीक है ना? मार्को पोलो आता है कहीं से और जाता है कई मुल्कों में, तो that was the ambassador of the globalization. Then is आगे उसकी 4 किस्में हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, आपका वक्त बड़ा कीमती होता है। और political perspective is, this is the most important point. When we talk about the globalization, it means the erosion of the nation state system. लेकिन almost 4 decades till 1970s, nation state actually worked very seriously in the world, very effectively, because what the policies they devised, that was for their boundaries, within the boundaries, and those policies actually play the role to impact or influence their foreign policies. But now this has almost finished, because neoliberal globalization actually promote that nation state, they are just a boundary, but their policy is only and should be to facilitate the capital. What one? This one? Yeah. In the political perception. Sorry? The reason हम यहाँ पे जब है ना, हम इसी के लिए आए थे कि हाँ, जो हमें जो सिखाया गया था वो ठीक था कि गलत था, क्योंकि अगर तुम अपना दिमाग खोलने के लिए आगे बढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मैं किधर जा रहा हूँ। तो हमें इसी जगह पे स्टक किया गया है, और आज हम यहाँ पे हैं तो इसी के लिए हैं कि हम इसे आगे बढ़ें। और अगर मैं समझ रहा हूँ तो मैं आपको समझाऊँ और इसको भी समझा दूँ, तो जो मेरे साथ समझेगा और मेरे आगे बढ़ेगा, हाँ, तो वो मेरे साथ होगा, वो मेरे साथ चलेगा, और जो नहीं होगा वो उधर स्टक रहेगा, वो पीछे रह जाएगा। नेशन स्टेट में फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट हैज बीन डिमांडेड दैट दे आर प्रोटेक्टर ऑफ द इनफ्लो ऑफ द कैपिटल, एंड कैपिटल इनफ्लो इज बियॉन्ड बॉर्डर्स, इट हैज नो बॉर्डर्स। ठीक है ना? मैंने जो आपको शुरू में अर्ज किया है कि नेटवर्क्ड इकोनॉमीज, डिजिटलाइज्ड इकोनॉमीज, तो उसके ऊपर स्टेट क्या कंट्रोल करेगी? इफ यू बाय द क्रिप्टो करेंसी, हाउ स्टेट कैन स्टॉप इट? नो, बिकॉज दे हैव टू डील इन द ग्लोबल वर्ल्ड। तो जो आप आज का नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि नेशन स्टेट बाउंड्री के अंदर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदार है, अपने मुल्क की हिफाजत की जिम्मेदार है, लेकिन सरमाए के मामलात में वो दुनिया के साथ चलेगी, और उसका रोल सिर्फ ये होगा कि स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर एंड द कैपिटलिस्ट। उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेगी, बल्कि फ्री मार्केट देगी जहां से सरमाया अपना रास्ता खुद बनाएगा। देन इज सर्टन लॉस ऑफ नेशनल सोवरेनिटी। जब हम इस पर आते हैं तो फिर ग्लोबलाइजेशन का जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव है दैट टेल्स अस कि नेशन हैज लॉस्ट द सोवरेनिटी। सो दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट हैज 2 different stance. You may go against it, you may follow it,
और सो वी कैन नॉट डिसाइड येट कि हमें करना क्या है, बिकॉज द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज and their people, their academia actually are not aware of these very, sublime connotations. वो इसको समझ नहीं पा रहा है और इसके लिए confusion बहुत ज़्यादा है, masses में confusion बहुत ज़्यादा है। अभी ये चल के आज economic perspective में अगर आप आएंगे तो the only objective of the neoliberal globalization is economic integration of capitalism. And economic integration of capitalism is possible through free market economy and deterritorialization and global interdependence. अब ये नहीं हो सकता, the people living in Afghanistan under the rule of the Taliban, they say we can grow our crops, we can do everything, and we are not related to the world. They have to deal with the world. And this is not possible for Pakistanis कि मैं और आप ये कहें कि जनाब मैं मुझे क्या पड़ी है, मैं किसी से क्यों तल्लक रखूं. So this is not possible. Right now, no country in the world, if they show defiance to this system, the sanctions will be imposed. Iran is an example. Afghanistan is an example. So when our Pakistani society and Pakistani university professors and those who have inclination to the orthodoxy, they teach their students that actually it's not like this, the clock can move backward and we can go into that age. No, this is totally against the reality and the ground realities in the world. And the last one is the most important and that we can say the most appreciable perspective of the globalization is cultural activism, because now the world is coming closer and closer. Now मैं यहाँ पैंट पहन के खड़ा हुआ हूँ, कोई जीन पहन के बैठा हुआ है, कोई शलवार कमीज में बैठा हुआ है. अभी तो हमारे मुल्क में बैनुल अक़वामी दुनिया के लोग नहीं आते. अगर वो आ जाएं और हम उनके साथ उस तरह हो जाएं जैसे चाइना में हैं कि पूरी दुनिया के लोग आते हैं, मलेशिया में हैं कि सारी दुनिया आती है, या आप जाते हैं यूरोप में तो आप देखते हैं कि किस तरह लोग अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं. हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि हम अभी तक उससे निकल नहीं पा रहे. तो वो जो ग्लोबलाइजेशन का कल्चरल और सोशल एस्पेक्ट है ना, वो भी हमें नहीं मिल पा रहा, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिल पा रहा. ठीक है ना. ये तो मैं थोड़ी अभी तमीद बांध रहा हूं, तो फिर अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं. कल्चरल होमोजेनिटी, नोबडी कैन स्टॉप इट. आई अश्योर यू, मुल्ला, जमात इस्लामी और ओल्ड फैशन्ड पीपल, दे कैन नॉट स्टॉप ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस. मैं उनका सपोर्टर नहीं हूं, बीइंग ए सोशल डेमोक्रेट और सोशलिस्ट. आई डोंट बिलीव कि भाई आप अपनी कल्चरल हेजेमनी हमारे ऊपर लाए, या आप मैकडलाइजेशन कर दें, या आप KFC बेचने शुरू कर दें. बट इट हैज़ डन इट. वी हैव टू बी एक्लेमेटाइज विद दिस वन. ये एक हकीकत है. नाउ अगर आप पूरी इकॉनमी को अपने जहन में ले आएँ तो फिर आप देखिएगा कि इस सूरत हाल में अमेरिका कैन नॉट एस्केप फ्रॉम द डिक्रीज ऑफ द पब्लिक फंडिंग फॉर द एजुकेशन. That is the concept, that is the reason which actually developed the idea how universities can become self-reliant. So next one, sir. Sir, please next. अब आप देखें कि in globalization driven reforms, actually these two, they are in actuality, they are three. पहली है ग्लोबलाइजेशन ड्रिवन रिफॉर्म, नंबर 1 कॉम्पिटिटिवनेस ड्रिवन रिफॉर्म्स, देन फिनेंशियल, और तीसरी थी इक्विटी ड्रिवन रिफॉर्म. क्योंकि वो इससे रिलेटेड नहीं थी तो मैंने नहीं डाली, आप को बॉदर नहीं किया. अब आप देखें कि IMF एंड वर्ल्ड बैंक, दे प्रेजेंटेड द आइडिया टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इन ब्राज़ील, इन अर्जेंटीना, एज वेल एज इन इंडोनेशिया, बोलीविया, जहाँ भी वो अपना प्रोग्राम लेके गए ना, इवन इन अमेरिका. तो पाकिस्तान भी उसके, हम तो उनके बड़े ख़रीदार हैं ना, तो उनके बड़े कस्टमर वो हैं, कंज्यूमर भी हैं और कस्टमर भी हैं और स्लेव भी हैं.
तो उन्होंने एक स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम दिया और उन्होंने स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम के बुनियाद रखी इन 2 ग्लोबलाइजेशन ड्रिवन रिफॉर्म्स के ऊपर। उन्होंने कहा कि जो भी दुनिया में मुल्क अंडर स्ट्रेस हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेस हैं और वो चाहते हैं कि वो तरक्की करें, तो वो 2 काम करें। नंबर 1, दे शुड प्रमोट कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस मीन्स द competition among the organizations, competition among the capitalist, competition among the employees of the organization. Who is competent, who is efficient, he will survive. So it's a survival of the fittest. अगर मार्क्स के वो डार्विन के हवाले से देखें तो इट्स सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आप और मैं इस कंपनी में काम करते हैं, सपोज करें ब्लैक होल में, तो वही बंदा सर्वाइव करेगा जो हर वक्त एफिशिएंट होगा। जिसकी एफिशिएंसी कम होगी तो ओनर कहेगा सॉरी यार, वी कैंट रन टुगेदर, वी कैंट वर्क टुगेदर। दूसरा इसकी बुनियाद थी प्रोडक्टिविटी, कंपटीशन फॉर प्रोडक्शन, कंपटीशन फॉर प्रोडक्शन। आप काम करते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, आप प्रोड्यूस करेंगे तो आपको आपका हिस्सा मिलेगा। और वो लोग जो ज्यादा हैं दे हैव टू बी कट डाउन। सो दूसरी थी कि फाइनेंस को बचाना कैसे है, और कॉम्पिटिटिव ड्रिवन रिफॉर्म मींस हाउ टू प्रोड्यूस द कैपिटल एंड हाउ टू सेव द कैपिटल। सो सेविंग में उन्होंने कहा कि कॉस्ट कटिंग। देखिए एक जमाना था जब पाकिस्तान के हर दफ्तर में रजिस्टर लेके क्लर्कों की तादादों हर तरफ मैनुअल वर्क हो रहा होता था। अब मैं अल्बर्टा यूनिवर्सिटी में गया तो एक औरत थी मैडम लॉरेन पेरी, उसने मेरे स्कॉलरशिप के सारा काम किया। उसने मुझे लेटर भेजा, उसने मेरी इमिग्रेशन डील की, उसने मुझे टिकट भेजी। जब मैं वहाँ गया उसने मेरा बैंक अकाउंट खोला, उसने मेरे जो 6 महीने की रिसर्च थी वो पूरी मुझे असिस्ट की। और 2 औरतें सिर्फ इंटरनेशनल ऑफिस में काम करती थी, एक लूसी और एक वो, और पूरी दुनिया से इंटरनेशनल स्कॉलर्स उनके आते थे, स्टूडेंट आते थे। एंड दे रन 4 डिपार्टमेंट्स ऑफ द फैकल्टी, ओनली 2 वुमेन। सो दिस इज कॉम्पिटिटिव प्रोडक्टिविटी। और अब उसको अगर मैं मिसाल पेश करूं तो उन्होंने 2 औरतों ने कितना सरमाया बचा रखा था डिपार्टमेंट का। सो दिस दे डिमांड फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज, दिस दे डिमांड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अब आप एक लम्हे के लिए अपनी यूनिवर्सिटियों की तरफ नजर घुमाएं और फिर मेरे साथ, मैं थोड़ी देर पानी का एक घूंट ले लूं, तो आप मुझे ये बताएं कि जब आप दफ्तर जाते हैं किसी एडमिन ऑफिस में यूनिवर्सिटी के या डिपार्टमेंट में, तो एक क्लार्क दूसरे के पास, दूसरा तीसरे के पास, तीसरा चौथे के पास, और काम किसने करना होता है? पहले वाले। नेक्स्ट सर, is it I think I'm not boring? You are taking interest, sure? Then देखिए अब ये है नंबर 1, ये 4 मुख्तलिफ चीजें हैं। जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो है न्यू लिबरलिज्म। एंड न्यू लिबरलिज्म, द आइडिया इज फ्री मार्केट इकोनॉमी, एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी इन्फ्लुएंसेस ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, और उसमें से जिस चीज ने जन्म लिया, जिसको उन्होंने पॉपुलर किया, उसको वो कहते हैं ग्लोबलाइजेशन, कि हम सारी दुनिया मिल रहे हैं। और ग्लोबलाइजेशन ड्रिवन रिफॉर्म जो अभी हमने डिस्कस किया, और उसमें से फिर सारी जो उसकी इम्प्लीकेशन आई वो ये आई कि हाउ टू मेक द यूनिवर्सिटी सेल्फ रिलायंट। जब हम कहते हैं ना एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी, तो नाउ यू हैव कम टू द आइडिया द यूनिवर्सिटी that is self-reliant, using its structure, using its physical infrastructure, using its faculty, labs and everything, and then they produce their own financial resources, and they are not heavily dependent upon HEC or public funding. So ये सारी कहानी है जिसको अब हम आगे एक दूसरे से शेयर करने जा रहे हैं। Please, sir. Please, next. Number 1. Before this model that developed by Burton Clark in 1994 and to upward, उससे पहले ये 4 दुनिया में बड़े मॉडल थे। एक वो जर्मन मॉडल, जर्मन मॉडल एक्चुअली
presented or have it had or has three major characteristics. Number one, creation of knowledge, and creation of knowledge. Number two, transmission of knowledge and research university model. तो जर्मन यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअली आर रिसर्च यूनिवर्सिटी कि वहाँ पे वो कहते हैं कि हमें प्रोफेशन की तरफ जाना है और स्किल डेवलपमेंट पे जोर देना है और रिसर्च को प्रोमोट करना है. It is due to that their companies are mainly dealing in the automotive, in other sort of industrial subjects. फिर है नेपोलियनिक यूनिवर्सिटी मॉडल फ्रांस, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्योंकि वो आपको पता है कि बड़े बड़े जो फिलोसफर्स थे उनके ज़ेरे असर रहे, रोसो आए, उसके बाद वोल्टियर, उसके बाद ह्यूगो, और इस तरह वोल्टियर ने कहा था कि आपको तो मेरे से इख्तलाफ हो सकता है लेकिन मैं आपके इख्तलाफ के लिए अपना हक़ के इख्तलाफ इस्तेमाल करता रहूँगा. ठीक है ना. तो वो उस तरह फिलोसॉफिकल ज़्यादा हो गए. एंड दे वोकेशनल ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट दैन ह्यूमैनिटीज़. उन्होंने कहा कि ठीक है हम वोकेशनल ट्रेनिंग दें. अब वोकेशनल में और प्रोफेशनल में फ़र्क है. वोकेशनल है जो लोअर लेवल का वर्कर होता है, लाइक द नॉट वेरी हाईली प्रोफेशनल इंजीनियर और उस नीचली कैटेगरी जिसे डिप्लोमा वगैरह कहते हैं. एंड देन रिसर्च टेक्स प्लेस आउटसाइड. उनका यूनिवर्सिटी में रिसर्च नहीं होती है, रिसर्च कंपनीज का काम है करना, यूनिवर्सिटी का नहीं. और रॉटिंग की तरफ चले गए या रटे वाला निज़ाम उनके यहाँ बहुत मकबूल हो गया. और ब्रिटिश जो थे उन्होंने कहा जी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू लिबरल एजुकेशन प्रोवाइड्स ब्रॉडर बेस ऑफ प्रोफेशनलिज्म, लेस एम्फेसिस. और उधर अभी भी आप देख लें कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड आर इट्स एग्जाम्पल्स. और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ मोर डाइवर्सिफाइड एंड रिसर्च ओरिएंटेड, कम्बिनेशन ऑफ ऑल यूरोपियन मॉडल. उन्होंने इन तीनों को मिलाया और उन्होंने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो लिबरल साइंस और ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेज प्लस इंजीनियरिंग, साइंस, नेचुरल साइंसेज का कम्बिनेशन होगी और उसको हम आगे लेके बढ़ेंगे. चीनियों ने भी अपना मॉडल जो अब डेवलप कर लिया है वो इसे कहते हैं हाफ ब्रेड नेशनल यूनिवर्सिटी मॉडल. और ये वो कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट चूँकि वो आयरन कर्टन में बंद थे पहले, तो 80s के बाद दे ओपनड अप और उनका कि दुनिया के साथ मिल के चलना पड़ेगा. तो उन्होंने बाहर की दुनिया के मॉडल को और अपने मॉडल को जोड़ा और फिर उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ की 100 यूनिवर्सिटीज़ को कहा कि ये वर्ल्ड क्लास होंगी. उनमें से फिर 30 उन्होंने कहा कि ये हमारी पहली 100 में आएंगी. उनमें से फिर उन्होंने कहा कि अब हम इसके ऊपर वो आगे थोड़ी बहुत भी आगे चलें थोड़ा सा. नेक्स्ट अब आते हैं अपनी असल बात की तरफ जिसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं. ये उसका बैकग्राउंड. आई होप यू हैव एंजॉयड इट. एंड नाउ नेक्स्ट वन इज द वर्ड एंटरप्रेन्योर, a person who organizes and manages any enterprise, especially a business with considerable initiatives and risk. The word entrepreneurship as an adjective that refers to the work of entrepreneur. मैं इसको बड़ा सादा करता हूँ. एंटरप्रेन्योरशिप ये है कि ये एक हॉल है, इसके अंदर 50 लोगों के बैठने की गुंजाइश है और सीटें खाली पड़ी रहती हैं. तो आफाक साहब को टास्क दिया गया है कि भाई ये भरा हुआ होना चाहिए और इससे पैसे भी कमाने हैं. तो हाउ विल यू अर्न द मनी, कैसे कमाओगे? ये लेक्चर तो मुफ्त होते हैं ना. ये तो आप एक स्कॉलर बुला लिया, कोई प्रोफेसर बुला लिया, वो बेचारा खुश हो के आ गया, काम करके चला गया और आपके पास फंडिंग है, यू आर यूजिंग दैट. ठीक है. बट एंटरप्रेन्योरशिप इज कि यू यूज दिस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यू अर्न आउट ऑफ इट. You use this existing resource and then you earn and make this institution self-reliant. तो उसकी कोई एक मिसाल कोई बंदा दे दे कि भाई क्या हो सकता है यहाँ पर, कैसे पैसा कमाया जा सकता है इस सारी चीज़ को रख कर. जहाँ तक मुझे समझ आ रही है तो ये है कि हम हेल्प करेंगे एक दूसरे के. अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके बदले आप भी किसी जगह पे मुझे कुछ सिखाएंगे या मेरी हेल्प करेंगे. तो यहाँ से मैं अगर कुछ चीज़ लेके जा रहा हूँ और मैं उसको समझ रहा हूँ तो उसके मतलब ये है कि आपकी भी मुझे हेल्प करनी चाहिए. नहीं ये तो सेम चीज़ पे आ रही है. ये तो होगी मतलब ना एकेडमिक, ये तो होगी ना एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन. बट आई एम टोटली टॉकिंग इन द टर्म ऑफ फाइनेंस कि अगर आपने फाइनेंस बढ़ानी हो इस इदारे की तो इस कमरे को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आई थिंक फ्री के बाद ना इस पे टिकट लगा देंगे. Yes, you can say कि you come up
वी विल कॉल अ पर्सन लाइक द टेड टॉक. अगर मुझे यह मौका मिले तो मैं हर हफ्ते एक पाकिस्तानी बुलाऊं, उसकी टिकट लगाऊं और उसको कहूं कि तुम अपनी जिंदगी की सारी कहानी सुनाओ, किसी राइटर को, किसी अदीब को, किसी साइंटिस्ट को, और उससे हर हफ्ते पैसा आपके डेली बेसिस पर पैसा आएगा. एंड देन पीपल विल वेट कि हाउ आई कैन गेट द टिकट फ्रॉम ब्लैक होल. दिस इज एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी. This is the entrepreneurial activity. What we are doing now, it is purely freelance intellectual activity. This, you have got the money from some resources and you are spending, but you are not earning from your resources. This is the difference between a common university and the entrepreneurial university. Next, sir. अब इसका सिलसिला स्टार्ट हुआ इन 1970s. Global driven reforms actually started to work in the United States of America, and they were specifically meant for the business enterprises, but they trickled down to the higher education system. The government announced that now the public funding for the public universities will be decreased. And then in 1980s, Margaret Thatcher announced that now we are going for the privatization of the cost, जिसे कहते हैं कि the institutions which were in deficit, we will sell them, और उस तरह. So this lack of funding and decrease of funding in America forced their theorists to think about the how to increase the money, how to create new resources for earning. तो पहला जो बंदा था उसका नाम था एस्क्विज, हेनरी एस्क्विज. ये MIT का प्रोफेसर था और he floated the idea the academic entrepreneurs. प्रोफेसर्स, उसने कहा कि academic entrepreneurs हैं और they will sell their academic जितना भी उनकी फैकल्टीज़ हैं उसको वो बेच सकते हैं, और वो कैसे इसको इनोवेट करेंगे. एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि आपने अपने मौजूदा वसाइल से सस्टेन करना है और फिर उसे ज़्यादा कमाना है. तो उसने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर जो होंगे ये एकेडमिक एंटरप्रेन्योर होंगे उस बिजनेसमैन की तरह जिसके कम वसाइल होते हैं और फिर उन्हीं वसाइल के इस्तेमाल से वो कोई नई चीज़ सोचता है, करता है और आगे बढ़ता चला जाता है और उसका बिजनेस फ्लरिश करता है. द सेकेंड रेफर्ड टू एज द कॉरपोरेट मैनिपुलेशन थीसिस. इसने नोबेल ने 1970 में कहा, इसने उससे भी पहले कहा कि यूनिवर्सिटियों को एक कॉरपोरेट मॉडल की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है वो फंडिंग देने से कुतरा रही है. और एकेडमिक कैपिटलिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक पूरी बुक है, द एकेडमिक कैपिटलिज्म एंड द इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड. ये स्लाटर और रोड्स दो प्रोफेसर थे. इन्होंने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, अमेरिका में तहकीक की और फिर मुख्तसरन अर्ज करूं, इन्होंने कहा कि देयर आर टू, अगली कीजिएगा नेक्स्ट वन. तो इन्होंने कहा कि दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ के दो मॉडल हैं, एक है मार्केट ओरिएंटेड बिहेवियर और एक है कॉलेजियल बिहेवियर. यानी जो ऊपर बैठा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो कहेगा कि जनाब पैसे बढ़ाएं, तो प्रोफेसर रेजिस्ट करेगा, वो कहेगा मेरा काम तो आगे पढ़ाना है, मुझे तो आप तनख्वाह दें. दैट्स द पाकिस्तानी की फैकल्टी डज एवरी डे. आप उनको कहें कि जनाब इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी या कैद आज़म यूनिवर्सिटी की इतनी ज़मीनें खाली पड़ी हैं, बताएं उनका हमें इससे क्या लेना है, आप हमें तनख्वाह दें, हम पढ़ाने आते हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस. आगे अब हम आते हैं कि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ डिफिनीशंस दी, तो आप इनसे स्लाइड ले लीजिएगा. मसलन एस्क्विज ने कहा यूनिवर्सिटीज़ दैट आर कंसिडरिंग न्यू सोर्सेज ऑफ फंड्स लाइक पेटेंट research funded by contracts and entry into a partnership with a private enterprise means university and industry मिलकर चलेगी. ठीक है ना. इसका मॉडल जो था वो बड़ा मशहूर हुआ, ट्रिपल हिलिक्स मॉडल. इसने कहा कि द गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री, ऑल थ्री विल गो फॉर फंडिंग, देन यूनिवर्सिटीज कैन सस्टेन. दूसरा है इसको आप इनसे ले लीजिएगा, ये आप पढ़ लें खुद ही क्योंकि तकरीबन मिलती जुलती हैं. तो अगली स्लाइड कीजिएगा. सर जी एक्सक्यूज मी, एक स्टेप पीछे चलते हैं. अब थोड़ा सा कॉर्पोरेट मैनिपुलेशन के बारे में बता दें. हाँ प्लीज उस पे आइएगा.
corporate manipulation thesis is basically the universities should identify their resources, their faculty members who can play the role like a corporate business enterprise, the center of excellence, the research and engineering department, the research and agricultural universities, कि वो फसलन हाई यील्ड वैरायटी सीड जो है वो यूनिवर्सिटी की लेबॉर्ट्री तैयार करती है, देन दे कैन सेल इट, राइट. ओके जी, नेक्स्ट वन चलते जाए. मैं आखिर पे आना चाहता हूं, बस इससे भी आगे इस पे पीछे 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 ये देखें. अब नाउ डिफिनीशन है सारी, वो यू कैन गेट इट द स्लाइड और आई विल सेंड यू द स्लाइड, नो वरी. सो basically, towards entrepreneurial university model, two factors played the role. One is the global factors, and global factors are globalization, driven reforms, free market economy, where you have to compete within the national domain and within the international domain, and then knowledge-based economy. Until unless a state develop knowledge-based economy, they cannot meet the needs of the global economy. And then is demand for highly skilled manpower and massification of higher education. Pakistan population has rapidly increased and everyone want to get education, but the universities are lacking the resources, financial resource, physical resources. तो वो जो प्रेशर है उसको कैसे मीट करना है, ये पूरी दुनिया में हो रहा है, राइट. और इसको आप अगर हायर एजुकेशन पर आ जाएं तो सिर्फ एक बात ज़हन में रखें कि दी यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ द कंपेटिटर नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट इन द वर्ल्ड. जो बच्चे अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिसर्च में हाई क्वालिटी एजुकेशनल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ऑफर नहीं कर रही तो आपका यहाँ का बच्चा उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ने जाता, तो ग्लोबल इकोनॉमी में से आप ड्रेन कैसे करेंगे? देखिए ना, आप कैसे ड्रेन करेंगे? क्या केपीके में कितनी यूनिवर्सिटी हैं, सिंध में कितनी यूनिवर्सिटी हैं, बट एवरीबॉडी विश टू बी एन नास्टर इन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, और दे वांट टू गो टू सम अदर लाम्स, आर व्हाई दे बिलीव कि यहाँ क्वालिटी मिलती है. और जो यहाँ इस्लामाबाद वाला है, ये ज़्यादा पैसे वाला है, वो कहता है कि फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान, आई विल गो अब्रॉड. एंड नाउ स्टूडेंट आर वेरी वेल अवेयर ड्यू टू डिजिटलाइजेशन, सो द यूनिवर्सिटीज आर ऑन योर स्क्रीन एंड दे ऑफर यू देयर परफॉर्मेंस. देन बीइंग ए स्टूडेंट यू सिलेक्ट इट कि मुझे कहाँ जाना है. तो जो मुल्क के अंदर प्रॉब्लम थी, नंबर वन इंटरनल फैक्टर्स में गवर्नमेंट पॉलिसीज गो फॉर द डिक्रीज इन फंडिंग एंड इनकम्पैटिबल लिबरल यूनिवर्सिटी मॉडल जो अब हमारे मुल्क में है, ठीक है ना. और उसके बाद पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन. अब आप देखेंगे पिछली जो ये अभी पीडीएम की गवर्नमेंट गई है तो एक दिन में 34 की 40 यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेट एस्टेब्लिश करने का बिल पास कर गई. सो कैन यू थिंक कि उन 40 यूनिवर्सिटीज़ में किसी बच्चे को कोई स्कॉलरशिप मिलेगा? किसी बच्चे के लिए एजुकेशन फ्री होगी? नहीं होगी. सो देन इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ानी है, उसके लिए भी आपको यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, क्योंकि जब इंडस्ट्री बढ़ेगी तो डिमांड ऑफ स्किल्ड मैन पावर बढ़ेगी. और चेंजेस इन सोसाइटी यू कांट स्टॉप इट. कब तक आप उसके आगे दीवारें बनाएंगे या उसके आगे रास्ता रोकेंगे? दे कांट, वी कांट डू इट. नेक्स्ट वन जी, चेंज कीजिएगा. अब ये जो मॉडल था ना बर्टन क्लार्क का, इसने ये मॉडल की बुनियाद इन 5 बुनियादी असूलों पर रखी. नंबर वन, द स्ट्रेंथन्ड स्टीयरिंग कोर. स्टीयरिंग किसको कहते हैं? गाड़ी चलाने वाले को. और यूनिवर्सिटी के स्टीयरिंग पर हु सिट्स? नहीं, यूनिवर्सिटी का ड्राइवर कौन होगा? वीसी, ठीक है ना. अगर वीसी साहब ही एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट से आ रही होंगे, सो देन हाउ कैन यू डेवलप यूनिवर्सिटी इनटू एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी? सो उसने कहा कि अगर ये जो किताब है ना ये वाली, ये ज़रूर आप लोग ले लें, इनसे मैं दे जाऊंगा, फाक से मैं ले लूंगा वापस.
आप कॉपी करके पढ़ें। इसमें वॉरविक यूनिवर्सिटी मैं अब यहाँ से ना उसका एक जुमला आपको पढ़ के बताता हूँ, ताकि आ गए हैं तो फिर थोड़ा सा बोल रहे हैं तो हम अपना वो काम करें। देखें स्टीयरिंग कोर के बारे में, स्ट्रेंथ एंड स्टीयरिंग कोर के बारे में वो कहता है कि एक होता है वीसी जो अनएम्बिशियस होता है, एंड द अदर वन इज एम्बिशियस. But ambitious universities and universities concerned about their marginality and even their university cannot depend on old habits of weak steering. They need to become quicker, more flexible, and especially more focused in reactions to expanding and changing demands. They need a more organized way to refashion their programmatic capabilities. यानी उसके जो ऊपर पूरी हायर मैनेजमेंट, सिंडिकेट, वीसी, प्रो रेक्टर वेक्टर, जो भी ऊपर मैनेजमेंट उसको कहते हैं जो पॉलिसी बनाती है, और एडमिनिस्ट्रेशन हम उसको कहते हैं जो इम्प्लीमेंट करती है. अगर ऊपर वालों ने ये सोच लिया है कि हमने यूनिवर्सिटी को बदलना है और ओल्ड फैशन से निकलना है और नए रिसोर्सेज पैदा करने हैं, तो देन दैट विल ट्रिकल डाउन टू द फैकल्टी एंड द स्टूडेंट्स. और नीचे चाहे हम जो करते रहें, नीचे वाले प्रोफेसर, स्टूडेंट्स वो लाख समझाते रहें, और हायर मैनेजमेंट अपनी बात पे कहे कि नहीं ओल्ड फैशन रहना है, तो नथिंग कैन बी चेंज्ड. ये उसका पहला नुक्ता था. दूसरा वो कहता है द एक्सपेंडेड डेवलपमेंट पेरिफेरी, ग्रोथ ऑफ यूनिट्स दैट मोर रेडली देन ट्रेडिशनल एकेडमिक डिपार्टमेंट्स, कि आम डिपार्टमेंट तो हर यूनिवर्सिटी में, लेकिन उनसे हटकर वो कहता है कि रीच अक्रॉस ओल्ड यूनिवर्सिटी बाउंड्रीज टू लिंक अप विद आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप्स इन वन फॉर्म. दीज यूनिट्स आर प्रोफेशनलाइज्ड आउटरीच ऑफिसेज दैट वर्क ऑन नॉलेज ट्रांसफर, इंडस्ट्रियल कॉन्टैक्ट, इंटेलेक्चुअल property development, continuing education, fundraising, and even alumni affairs in other larger and more bases form. They are interdisciplinary project oriented research centers. Is it clear? अगली बात वो कहता है the diverse funding base to fashion a new change oriented character. A university generally requires greater financial resources, in particular needs discretionary funds. Widening the financial base becomes essential since virtually everywhere mainline institutional support from government as a share of total budget. कि गवर्नमेंट को आप सिर्फ ये समझें कि तनख्वाह देने वाले इदारा रह गया है, बाकी सारा पैसा आपने खुद निकालना है. और कैसे निकालना है कि यू हैव टू गो फॉर द थर्ड सिस्टम इनकम पोर्टफोलियो, स्ट्रेच फ्रॉम इंडस्ट्रियल फॉर्म्स, लोकल गवर्नमेंट, फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन. आप अपने मुख, जैसे मैंने अभी मिसाल दी आपको कि अगर आप यहाँ टिकट लगाते और मुझे बुलाते कि इस पे बात करो, तो 4 टके मैं भी ले जाता और आप भी कमाते. तो वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब लेबॉरेटरीज मौजूद हैं, जब प्रोफेसर्स हैं, तो जो स्टूडेंट कम्स फॉर PhD और पोस्ट डॉक, दे आर चीप लेबर्स. And you can ask the companies, if you hire one engineer, he gets 1 lakh, but if you give 1 lakh, 10,000 per month to a PhD students as a stipend, he can work the same for you. So we should link the university with the industry. The stimulated academic heartland, these are the professors. These are the professors with the mindset of entrepreneurship. समझिए मेरी बात. हार्टलैंड, मरकज, दिल, न्यूक्लियस प्रोफेसर हैं. मैं अक्सर कहता हूं कि हम टीचर जो है ना, हम किसी इदारा एक दिल होता है और प्रोफेसर्स आर द वीन्स. दे सप्लाई द ऑक्सीजन एंड द ब्लड टू द इंस्टीट्यूशन. इफ दे आर फंक्शनिंग प्रॉपरली, the institution is rising up. But if they become, they are obstructed by bad cholesterol, bad intentions, groupings, और इस तरह की उनकी कुछ सोच ही नहीं है, उनके अंदर वो नहीं हो रहा जिसको बोलते हैं इनोवेशन, तो फिर कुछ नहीं. इंटीग्रेटेड एंटरप्रेन्योरियल कल्चर, माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपका प्रोफेसर ये सोचता है कि मैं अब कैसे पैसा बढ़ा सकता हूँ, तो देन इट स्टार्ट्स. अब चाइना में मैं रहा, कनाडा में मैं पढ़ा, तो मैंने देखा कि प्रोफेसर जब नया सेमेस्टर स्टार्ट होता था, दे ब्रिंग
their posters and they put into they paste on the bulletin boards. Even they paste into the lifts and on the walls. I'm offering this kind of courses. Then they briefly describe my course is very interesting. It offers this, and students read about that and then they select the course. वहाँ ये नहीं होता कि आप यूनिवर्सिटी गए हैं और आगे लिखा हुआ है कि जनाब डॉक्टर नासिर, डॉक्टर फाक, डॉक्टर सैमा, डॉक्टर अफजल ये पढ़ाएंगे, लिहाजा ये 5 कोर्स ही आपने लेने, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. दे स्टार्ट फ्रॉम 8 o'clock to 10 o'clock इन द इवनिंग, इन द नाइट. उसमें आप चाहे दिन के 12 बजे आके पढ़ लें, चाहे रात के 10 बजे से पहले पढ़ लें. यू कैन सेलेक्ट योर कोर्सेज आउट ऑफ थाउजेंड्स. और वो उस फैकल्टी में ये नहीं होता कि एक फैकल्टी पढ़ा रही है. ओनली दे ऑफर फ्यू रिसर्च बेस्ड कोर्सेज. मेथडोलॉजी वगैरह जो है वो आपको लाजमी पढ़ने होते हैं. बाकी आपके पास पूरी दुनिया खुली हुई है, रिसर्च आपके पास खुली हुई है. नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट. अच्छा जी, अब ये एंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट पैराडाइम्स की 4 बेसिक हैं. ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम टाइट फाइनेंसिंग कंट्रोल मैकेनिज्म इन द मेन पैराडाइम. मेनली फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. यानी आपने अपने मुश्किल हालात में ये नहीं सोचना कि अब इमदाद कब आएगी. नो, यू हैव टू प्लान इट अर्लियर. एंड देन फ्लेक्सिबल अप्रोच कि यू कैन गो कोलैबोरेट विद एवरी इंस्टीट्यूशन. एंड देन कोहेरेंस इन पॉलिसीज कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो हुकूमत के साथ भी और सोसाइटी के साथ भी और इंडस्ट्री के साथ भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी कोहेरेंट होंगी तो आपकी यूनिवर्सिटी आगे बढ़ेगी और वो पैसे कमा सकेंगे, आपको आसानी होगी. नेक्स्ट वन इज़ नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लीडरशिप एंड गवर्नेंस इज़ वेरी नेसेसरी. लीडरशिप विद विजन एंड देन गवर्नेंस स्ट्रिक्ट. ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी में पीपल एंड इंसेंटिव. ये जगह है यहाँ पर लोग काम करते हैं. जो काम करने वाले एम्प्लॉई है उसको इंसेंटिव देंगे तो वो उसका दिमाग सारी रात काम करता रहेगा और सुबह वो नया आइडिया लेके आ जाएगा. लेकिन इंसेंटिव नहीं होगा तो वो कहेगा भाई जिस पे इस पे तो इतने में ही काम हो सकता है. पुट यू इन जस्ट फॉर योर टू मेक यू सम फन कि मैं अपने ज़िला झांग गया तो मेरे दोस्त थे नेशनल बैंक के मैनेजर. तो बड़े दिनों बाद में गया तो मैं शाम 4:30 बजे उसके पास मिलने चला गया. जब 5 बजे ना तो उसके ड्राइवर आया और उसने आके ना यूं अपनी गाड़ी, उसकी गाड़ी की जो की थी उसने टेबल पर रख दी. तो उसने कहा ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, थोड़ी देर चाय पी लें तो फिर चलते हैं. उन्होंने कहा सर 5 बज गए हैं, तनख्वाह 5 बजे तक मिलती है, आप जाने और गाड़ी. दिस इज द अप्रोच. अब एक और आपको मजे का वाक्य सुनाता हूँ. चाइना में जो मेरा सुपरवाइजर था, ही वाज द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, त्सिंगहुआ यूनिवर्सिटी, जिसे वो अपनी MIT कहते हैं. अरबों डॉलर उनके पास पड़े हुए हैं. वो एक दिन मुझे कहता है जस्ट हैव अ सीट और आई एम कमिंग. ही गो डाउन स्टेयर्स, 4 फ्लोर नीचे गया और 4 कुर्सियां उसने यहाँ रखी हुई और वो वापस आ रहा था. तो मैं उठ के खड़ा हो गया गैलरी में कि सर कैन आई हेल्प यू? के नो. उसने वो कुर्सियां बिछाई दफ्तर में. तो मैंने कहा सर इन माई कंट्री द डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट हैज़ अ कार, देन हैज़ 3 different peons. One receives the bag, other one transfer it, third one put onto the table, and the fourth just push the chair. उसने कहा why you are very developed in the world. और उसका कोई असिस्टेंट नहीं था, उसको कोई पियन नहीं था. मैं हैरान होता था कि यार मेरे मुल्क में अगर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर होता तो शायद वो कहता नहीं मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं तेन रख ला अपने को एज ए स्टूडेंट, मेरे को टाइम नहीं है चल. बट ही टीचेस इक्वली विद हिज प्रोफेसर्स. सो दोज नेशन मेक द डेवलपमेंट हु गो फॉर दिस. हम उसमें भी नहीं आ पाए. ये बड़े दुख की बात है. मुझे बड़ी तकलीफ होती थी देख के जब मैं कहीं से भी, खुदा गवाह है कि मैं जहाँ से भी गुजरता था उन मुल्कों में, मेरा दिमाग 24 घंटे ये सोचता रहता था क्या मेरे मुल्क में भी ये हो सकता है, क्या मैं भी वहाँ जाकर ये पढ़ा सकता हूँ. जब मैं यहाँ आया और मैंने सोचा कि भाई नहीं करनी नौकरी यूनिवर्सिटी की, कॉलेज में ही पढ़ाएंगे जहाँ हैं रोज़ी लगी है, तो मेरे प्रोफेसर दोस्त मुझे कहते हैं कि जो कुछ तुम पढ़ के आए हो ना वो उन मुल्कों के लिए था, यहाँ किसी को कुछ ना बताना, जो हम चल रहे हैं हमें ऐसे ही चलने देना.
This is the thinking that we cannot make progress. आगे चलिएगा सर. ये Entrepreneurial University is an internationalized institution. People come from all across the world. Can you imagine if students from different countries, they get admission in your Pakistani universities due to high quality of research, due to patents, of different inventions, due to high teaching learning process, due to peaceful environment. Will they pay in Pakistani rupee or they pay in dollars? Then you can earn. Universities are now converting into industries. And that industry is basically the academic industry. And academic industry is being run by the academic entrepreneur. And that is the professor and the students. Or last one is measuring the impact of the entrepreneurial university. ये सारी बातें जब किसी यूनिवर्सिटी का वीसी और उसकी हाई अप्स बैठकर इसके मुताबिक डिसीजन मेकिंग करते हैं तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट्स टू कन्वर्ट. नेक्स्ट वन सर. अब आप देखें ये वही चारों बातें हैं कि जो कुछ उसने कहा बर्टन क्लार्क ने अपने मॉडल में कि ये 5 चीज़ें हैं, वो 5 की 5 चीज़ें उधर से उसने डेरिवेट की थी और उसने उसको एक नए कह लें कि फॉर्म में हमारे सामने रख दिया. और फिर ये मॉडल अमेरिका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ. फिर उसके बाद यूरोप में इसने अपने हिसाब से उन्होंने इसको डील किया. और इन द लास्ट चाइनीज़ ने कहा कि 80s के बाद कि इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं है. अभी आगे बात करते हैं. नेक्स्ट वन सर. लास्ट लेसन्स फॉर पाकिस्तान सर. नेक्स्ट देखिए, नंबर 1, your university still is working under the British legacy which they left. Lord Macaulay's laws are still implementing. Number 2, emphasis on liberal education. नई यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं और उनके अंदर कोई emerging sciences, new subjects नहीं पढ़ाए जा रहे. I can put you the example of my district university, University of Jang. I saw their website और मैं हैरान हुआ कि एक ऐसा इलाका which is a sugar cane grower, that area is crop ग्राम या चना पैदा करता है, कपास पैदा करता है, फ्रूट पैदा करता है. और वहाँ पे यूनिवर्सिटी क्या पढ़ा रही है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश लिटरेचर. What is their output right now in the economy? Can they not go for the research institute of sugar cane? They can go for research institute of cotton high yield variety seeds. They can go something new, data analysis, analytic sciences. और दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी का मॉडल उठाते और उसको देख लेते. और उसको आपको पता लुक आफ्टर कौन करता है? जो वहाँ का स्पाई साहबा का एक मौलाना है वो उसका लुक आफ्टर करता है. डीसी उसके मतहत फैसले लेता है. तो हाउ कैन वी गो अप? रियली वी कांट गो अप. ये प्रॉब्लम्स है हमारे साथ. देन इम्बैलेंस बिटवीन साइंसेज एंड सोशल साइंसेज, ये भी मैंने आपको यही बात की है. एंड देन लैक ऑफ क्वालिटी रिसर्च. वन रिसर्च पेपर इज पब्लिश्ड एंड देयर आर 6 ऑथर्स. एक पेपर है, प्रोफेसर की कार्टिल्स हैं 1 2 3 4 5 6. और कहना यार मैं पेपर छाप रहे हैं, तेरा नाम पा देते, तू छापेगा मेरा नाम पा दे. And HEC accepts it. Or where the infamous journals. चाइना में जिसने पीएचडी की डिग्री लेनी उसका एक पेपर सोशल साइंसेज साइटेशन इंडेक्स में होना चाहिए कम अज कम. और जिसने साइंस में जाना उसके हर साल एक पेपर ISI, पाकिस्तान वाली नहीं, वो जो है इंटरनेशनल साइंस इंडेक्स उसको बोलते हैं, उसमें उसके पेपर छपने चाहिए. अगर उसमें नहीं छपेंगे तो वो डिग्री से फारिग है. डिग्री नहीं मिलेगी जब तक वो पेपर मुकम्मल नहीं करेगा. कोई क्लास वर्क नहीं MS लेवल पर कि आपने पढ़ा और फिर आपका जो है ना क्लासें होंगी लेकिन आपका एग्जाम नहीं होगा MS और PhD में. कोर्स वर्क का आपने अपनी मर्जी के टॉपिक लेना है, पेपर छापना है और जाके दे देना, उस पर आपकी ग्रेडिंग होगी. तो हाउ द डिफरेंस इज दिस? ठीक है ना. एंड देन लास्ट, हैवी डिपेंडेंस ऑफ पब्लिक फंडिंग. एवरी प्रोफेसर इज वीपिंग, आई हैव नो मनी, how can I go for research? Why, you should change your mindset. The world has totally changed. Go for
innovation, innovate your subject, innovate your research and make it relevant to the society and the needs of the society. उर्दू पढ़ा रहे हैं, पीएचडी किस पे हो रही है? अब्दुल लतीफ़ के नावल में ख़वातीन का किरदार, पीएचडी हो रही है भाई. why don't you go for the PhD to relate the Urdu language with the regional languages or with the teaching methodologies or how to teach Urdu in the school? This kind of PhDs are required to teach, to create the or to train the graduates and doctorates students for that purpose? No, not at all. इस्तारा फलां साइंस में चले जाएं तो वो पहले कहीं से ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड के किसी डिजिटल लैब से एक उतारेंगे पूरा थीसिस, उसको बदलेंगे, रिफ्रेज करेंगे, वो लिख के रख लेंगे और फिर अपने टीचर के पास जाके कहेंगे सर दिस इज़ द सिनॉप्सिस. वो कहेगा कहाँ से लिया है? सर वहाँ से लिया है. तो बस ठीक है, अप्रूव करवाते हैं और ज़रा काम लेट करना. तो दैट्स हैपनिंग. व्हाई आई डिड नॉट जॉइन द यूनिवर्सिटी? मैंने कहा ये बेईमानी वहाँ मेरे से नहीं हो सकती. तो मैं कहा बस ठीक है, जो मैं पढ़ाता हूँ यही ठीक है, ठीक है ना. और द लास्ट, अब आप हमारी देखें नंबर 1 जो कि एजुकेशनल पॉलिसीज आई, 3 कैपिटलिस्ट थी. एक भुट्टो के ज़माने में आई जो थोड़ी सोशलिज्म पे थी और वो उसके बाद ज़िया आया तो फिर रिवर्स हो गए कैपिटलिस्ट पैराडाइम की तरफ. और आज तक फिर यही चल रहा है कि हमने पैसा कैसे यूनिवर्सिटीज़ को कमाना है. आगे चलिएगा सर. अच्छा, अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ का जो सिचुएशन एनालिसिस है वो ये है, इनइफेक्टिव गवर्नेंस, टोटली डिवेस्टेटेड, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. आपके सामने हैं, यहाँ यंग बच्चे बैठे हुए हैं आप सारे. एंड देन इज इनएडिक्वेट फंडिंग. आप गवर्नमेंट से पैसा मांगते हैं, गवर्नमेंट भीख मांगने जाती है IMF से, वो आपको पैसा कहाँ से देगी? कुछ लोग हैं लेफ्ट वाले, वो खड़े होके कहते हैं इनकलाब आएगा, सुर्ख इनकलाब. भाई लाओ सुर्ख इनकलाब यार, फिर क्यों नहीं लाते? ले आओ. कहाँ से आएगा पैसा? कहाँ से आएगा? यूनिवर्सिटी के पास, आपकी गवर्नमेंट के पास नहीं है तो आपको कैसे दे सकते हैं? ठीक है ना. उसके बाद पुअर रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस. आप डीन के खुशामद करते हैं, आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के खुशामदी हैं, यू विल बी सिलेक्टेड एज द प्रोफेसर whether you are capable or not capable. This is the practice in all the universities of Pakistan. Without any, मतलब मैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में निहायत वसूख के साथ ये बता रहा हूँ. आई रन अ फोरम ऑफ प्रोफेसर्स, द पाकिस्तानी एकेडेमिया, उसमें 300 प्रोफेसर डॉक्टर्स हम इकट्ठे हैं, तो मुझे सब पता है कि यूनिवर्सिटियों में क्या होता है. मेरी मिसेज जो है वो पढ़ाती थी यहाँ विजिटिंग फैकल्टी कैद आज़म यूनिवर्सिटी में, तो इस साल उसे नहीं बुलाया. तो उसने कहा मुझे क्यों नहीं बुलाया? उन्होंने कहा जी वो फलां ने अपनी PhD स्टूडेंट रख ली है, वो 4 साल 5 साल से पढ़ा रही है, उसको हटा दिया है और अपनी कोई बंदा ले आए हैं. तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ना, ये बहुत गलत हैं, इसको ना ओवरकम करना पड़ेगा. एंड देन कम्स इनएडिक्वेट अटेंशन टू इनोवेट एंड क्वालिटी रिसर्च नहीं हो रही. एंड देन इज लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरियल अप्रोच एट स्टीयरिंग कोर लेवल, पोलिटिसाइजिंग हायर मनी. वीसी कौन लगाता है यार? राना तनवीर, शफकत महमूद, जिसने 50 लाख रुपया रेट रखा हुआ था फेडरल यूनिवर्सिटी के VC का. So this should not be done. VC should be the professor of the university. If he goes through that process, then he can run the institution. If he does not know what is happening in this black hole and he becomes the head of the black hole, he will spend time to learn and then he will retire. So this is, and failure in attracting foreign students, terrorism, bigotry, religious suffocation, तो बाहर से लोग आते ही नहीं हैं. Next one sir, I want to finish it. ये इसको छोड़ दें बस, ये फ्रेमवर्क है, ये इसकी हैं जी, how to combat to become number 1, adoption of entrepreneurial approach. Number 2, entrepreneurial steering core. VC must be visionary and innovative, and then faculty needs to become academic entrepreneur, ready to accept the challenge and innovate the subjects. Then radical forms of financial self-reliant university, utilization of available physical infrastructure जो है उसको इस्तेमाल करें, उससे पैसा कमाएं. नेक्स्ट चलिएगा.
आगे जाइएगा, ये सेम है तकरीबन। अब ये बजट है, ये आप खुद पढ़ लें कि ये यूनिवर्सिटीज़ के बजट हैं, और आप अपनी कैद आज़म यूनिवर्सिटी का बजट देख लें, मुझे तो नहीं मिला था उनकी वेबसाइट पर। ये ज़रूर सुनिएगा प्लीज़। इसकी आवाज़ आएगी कहीं से? ये इंडिया का मेयर है दिल्ली का, और उसने स्कूलों से एंटरप्रेन्योरियल स्टार्ट किया है। तो ये मैं इसलिए लाया हूँ, पता नहीं यहाँ लाना था या नहीं लाना था, बट आई हैव पुट इट हियर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि विजडम इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग, वी कैन गेट इट फ्रॉम एनीवेयर। सो इसको सुनिएगा ये क्या कह रहा है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए हैं। इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 12वीं क्लास के नतीजे 99.7% आए हैं, नंबर 1। दूसरी बात, इस साल दिल्ली में 4 लाख बच्चों ने अपने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, हमने एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस शुरू की। बच्चों को 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में हमने बिजनेस करना सिखाया। विजय जी, हम दिल्ली में 11वीं और 12वीं के हर बच्चे को दिल्ली सरकार की तरफ से 2-2 हजार रुपए देते हैं, और हम उसको कहते हैं बिजनेस करो, इस 2,000 रुपए से कुछ बिजनेस करो। तो वो बच्चा अकेला भी कर सकता है, टीम भी बना सकता है। तो मान लीजिए 5 बच्चों ने टीम बनाई, तो 5 बच्चों के 10,000 रुपए हो गए। 5 बच्चों की टीम ने एक ड्रिंक बनाई, उसका नाम रखा मिस्टिक डेट्स। वो कॉफी की तरह है, लेकिन उसमें कैफीन नहीं है, न्यूट्रिशियस ड्रिंक है, आयरन है उसमें, काफी कैल्शियम है उसमें। मिस्टिक डेट्स करके एक ड्रिंक बनाई। 5 बच्चों ने मिलके 10,000 रुपए इकट्ठे हुए। 6 महीने के अंदर इन बच्चों ने 2.5 लाख रुपए कमा लिए, 10,000 रुपए। फिर जब इन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों से अपनी बात रखी, तो 17,35,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट इनको मिल गया। इन बड़े बड़े उद्योगपतियों, 8 बच्चे इकट्ठे हुए, 16,000 रुपए इनके थे। इन्होंने कंपोस्ट बनाया, नई किस्म का कंपोस्ट खाद, और 10 महीने के अंदर इन्होंने 65,000 रुपए कमा लिए बेच के। ये बच्चे बेचते हैं माल, इंटरनेट पे जाते हैं, अपनी वेबसाइट वगैरह बना लेते हैं, माल बेचते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, खुद ही करते रहते हैं, खुद ही करते रहते हैं। और इस उद्योगपतियों 16 लाख रुपए इन लोगों को उद्योगपतियों से इन्वेस्टमेंट। 6 बच्चे उन्होंने गेमिंग प्लेटफॉर्म बनाया, 6 बच्चे मतलब 12,000 रुपए। इस 12,000 रुपए से ये 6 महीने में 1.5 लाख रुपए का माल बेच चुके हैं अपना, और इनको 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। अब आप थोड़ा सा सोच के देखिए, ये बच्चे जब कल डिग्री करके निकलेंगे तो ये नौकरी नहीं ढूंढ रहे होंगे, इनके पास ऑलरेडी बिजनेस आइडिया है, बिजनेस करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। बहुत बड़ी बात है, बदलाव जरूरी है। अब आप बताएंगे। आज दिल्ली के सरकार, आगे कर दीजिएगा सर, बस इट्स ओके। नेक्स्ट, ये अगर हम इफ वी वांट टू गो फॉर द एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज, सो वी नीड टू introduce new programs of studies related to the needs of the economy and the society. और मसलन अगर आप स्पिन ऑफ्स कहते हैं उस कंपनी को जो यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड करके देती है, आपकी यूनिवर्सिटियों में हर जगह इंक्यूबेटर्स और ऑरिक बने हुए हैं, ऑफिस ऑफ द रिसर्च इनोवेशन सेल्स। आप उनके पास जाएं, उनको कहें कि मैंने ये कंपनी बनानी है, वो आपको रजिस्टर्ड करा देते हैं। उस कंपनी को आपने चलाना होता है, और यूनिवर्सिटी को उसमें से आपने कुछ पैसे वापस करने होते हैं। तो नस्ट इज़ द यूनिवर्सिटी दैट हैज़ एस्टैब्लिश सच काइंड ऑफ बिल्डिंग्स कि वहाँ आप अपने ऑफिस खोल सकते हैं। ये क़ायद आज़म में भी हर यूनिवर्सिटी में है। तो आप वहाँ अगर पाकिस्तान स्टडीज़ के और हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप टूरिज़म की कंपनी बना सकते हैं, आप थिएटर बना सकते हैं ड्रामे पेश करने के लिए। आप अपना ड्रामा थिएटर बनाएं, इनसे रब्ता करें, यहाँ के स्टेज प्ले करें, आपको पैसे मिलेंगे। इसी तरह आप पब्लिशिंग हाउस खोल सकते हैं, आप किताबें छापनी शुरू कर दें। आप जनाब हिस्ट्री म्यूज़ियम छोटा सा बना लें और उस पर टिकट लगा लें। ये तो सोशल साइंसेज की बात है ना। तो आप टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन स्टार्ट कर सकती हैं यूनिवर्सिटियाँ, क्योंकि हमारे मुल्क में सर्टिफाइड टीचर्स नहीं होते। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज ऑन कमर्शियल बेसिस, आप किसी बड़ी
आप सरीना चले जाएं, उनको कहें कि मैंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करानी है, आप मेरे साथ क्या तावन करेंगे, वो आपको कहेंगे ठीक है हम आपको हाल देंगे, आप जो डॉलर कमाएंगे उसमें से मुझे इतने % दे दें। आप अपनी किसी 10 यूनिवर्सिटियों को मिला लें और उसको पब्लिसाइज कर दें नेट के ऊपर पूरी दुनिया में, तो लोग प्रोफेसर्स आ जाएंगे। ये वो चीज़ें हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ हैव द लार्जेस्ट एरियाज़, वहाँ पे आप बड़े बड़े प्लाजे खड़े कर दें, दीवारें खड़ी करने की बजाय उस दीवार की जगह प्लाजे बनाते चले जाएं यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से। उसमें आपकी हॉस्टल भी होंगे, उसमें बिजनेस भी होगा, उससे आपकी कमाई आनी शुरू हो जाएगी। आप तो यूनिवर्सिटी की तरफ से पब्लिक थी वो जो होती हैं फैसिलिटीज़, वो उनको देनी शुरू, आप हॉस्पिटल बनाएं यूनिवर्सिटी का, अब वहाँ पे आप ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे बल्कि पैसा कमाएंगे। सो देयर आर सो मैनी things that we can innovate, but actually all this can happen when the mindset is entrepreneurial. Still the Pakistani society and Pakistani academia is not accepting this idea of entrepreneurial university. They believe, even in Canada and Europe, in America, there is a debate on this model. They criticize it that education is a public good, and public good cannot be converted into enterprise, into business enterprise. But the question is, when your nation is failing to provide public service, then you have to go for some alternative, and that alternative is this. And this alternative is essential for Pakistani academia to become an academic entrepreneur and lead the university towards the self-reliance, rather than to dependent upon the HEC and the public and the provincial or federal governments. I'm very much thankful to the Black Hole to provide me this opportunity, and I'm also very thankful that although we were small in numbers, but it would be a productive discussion. Thank you very much. So nice of you.